Hmm. Okay, so good evening, everyone. Good evening. केमती अच्छो सबू स्टार्ट करिवा. So welcome to RAYACADEMY IAS and this is your weekly current affairs class, national based. Okay. So 27th 26th April jam already last class रे पढ़ी थिलु. Okay, 27th April ରୁ ନେଇକି 3rd May ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ will continue. Good evening ଚନ୍ଦ୍ରହେମର. Okay. So ତମ ମାନେ ମତେ କହିଲ କଣ କଣ ନ୍ୟୁଜ ଅପଡେଟ୍स ଅଛି ଦେଖିବା. ତମ ମାନେ କେତେ ଜାଣିଛ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ର important न्यूज हमरो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव रु ओपीएससी पर्सपेक्टिव रु कौन कौन सब न्यूज अच्छी एज पर योर व्यू और योर ओपिनियन जोटा इंपोर्टेंट थिबो मते को तम माने केती जानि छ लास्ट वीक रो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कोन मते चैट रे जल्दी जे जहा जानि छ मते चैट रे को. गुड इवनिंग दीपांजलि को जल्दी जल्दी को. What are the important current affairs of last week? बस लास्ट वीक रे कहबो ता पूर्वरु हमें जहा डिस्कशन करछु सेति की छाडी की आउ कोन इंपोर्टेंट सब अछि जल्दी को. चलो जल्दी को. गुरुची मछरी मछरी ठीक अछि बट कौन को लास्ट वीक रो कौन कौन इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स समान को हिसाब रे मते को. दीपांजलि चंद्रहेम्ब्रम आउ जे भी सब अच्छो कौन कौन इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स सब माने को हम तो पढ़िबा ही ऑब्वियसली पाखापाखि 50 टा स्लाइड अच्छी विल कवर अप बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट वीक. आई एम वेटिंग जल्दी को जहा भी माने खाली मते टॉपिक को कि मैडम ए न्यूज़ टा हेतिला कि से न्यूज़ टा हेतिला तो मु जानिबी कि तम माने भी किछि गोटे न्यूज़ सहित अपडेटेड रहउछ. जेमती हमें लास्ट क्लास पढ़थिलु एंटी डिफेक्शन लॉ कथा पढ़िलु डिलिमिटेशन कथा पढ़िलु दोज वेर इन न्यूज़. तो ए वीक रो एमती कोन न्यूज़ अछि कोन कष्ट होची आंसर लिखिया को किछि गोटे चैट करे को कष्ट होची कि छाड़ो किछि हबनी तम मान को द्वारा केते पचारिबी आ. ओके सो फर्स्ट इश्यू हला एटा जोटा न्यूज़ रे अछि लिपु लेक पास
मानसरोवर यात्रा सुनथिबो तो इट इज अबाउट टू बिगिन ओके बट नेपाल ऑब्जेक्ट्स टू मानसरोवर यात्रा via लिपु लेक तो जो माने भी माने मानसरोवर जीवा पई चाहुचन मानसरोवर यात्रा कैलाश पर्वत को जीवा पई चाहुचंती सेमान को पे गोटे रास्ता हला लिपु लेक देगी लिपु लेक इज बेसिकली ए माउंटेन पास इट इज ए माउंटेन पास ओके बहुत सारा माउंटेन पासेस हमर अछि लिपु लेक इज वन ऑफ द माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया कोठी अछि एग्जैक्ट लोकेशन जत तुम मते कहि परबो चैट बॉक्स रे बहुत भलो तो लिपु लेक देकी ही जणे मानसरोवर यात्रा करि परिबो किंबा कैलाश पर्वत को जाई परिबो बट सेथिरे एबे तो इंडिया अलाउ कला कि मानसरोवर यात्रा करि परिबो बट सेथिरे नेपाल वर्तमान ऑब्जेक्ट करूची okay so Nepal would like to balance its foreign policy relationship because we need all our friends now एठी गोटे कथा हला कि हमर नेपाल सहित किछि दुश्मनी नाही राइट वी आर फ्रेंडली नेबर्स तो मे बी आमे आउ किछि गोटे उपाय बाहर करि परथांतो जति ताको किछि पसंद हेलानी बट यू नो एटा हमरो रिलीजियस सेंटिमेंट को भी हर्ट करि पारे बुझि परछ बिकॉज़ इट इज नॉट ओनली ए पास लिपु लेक इज नॉट ओनली ए पास बट तार रिलीजियस सिग्निफिकेंस अछि बिकॉज़ इट कनेक्ट्स अस टू मानसरोवर इट कनेक्ट्स अस टू कैलाश आउ शिव भगवान एमती गोटे को पर्टिकुलर रिलीजन नॉट ओनली कि हिंदू माने कि शिव को पूजा करते सेमती नो आउ किछि स्लाइड रे तुमको देखेबी कि सब रिलीजन माने शिव को पूजा करते राइट तो एवरी रिलीजन रबी किछि गोटे इंपोर्टेंस अछि बुझ परछ तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रू भी इंपोर्टेंट प्लस स्ट्रेटेजिक व्यू रू भी इंपोर्टेंट चलो देखिबा प्रथमे मु तुमको एठी देखै दोछि कि मु को जगह कथा कहूछि ओके देखो सो दिस इज बेसिकली योर मानसरोवर पाखरे तमरो अछि गोटे राक्षस ताल ओके एंड दिस इज आवर न्यू दिल्ली लखनऊ तमे देखि परतो हमें केमिति हेई कि बेसिकली जदि तमरो एयरपोर्ट अछि कोठी कोठी अछि से पाखरे ओके एंड जदि तमे रोड जर्नी करिया को चाहूचो देन तमे को रास्ता देगी जाय परिबो बुझ परछो सो बेसिकली ए जो येलो लाइन तमे देखुचो एटा होची तमरो जदि तमे बाय रोड जिबा को चाहूचो मानसरोवर देन तमे केमती जाय परिबो मानसरोवर ओके एंड जो डॉटेड लाइन दैट इज बेसिकली तमरो एटा तमे कहि परिबो फ्लाइट रो रूट सेटा ओके सो हमर मेन कथा हला कि हमें बाय रोड गले हमें लिपु लेक देकी जिबा बुझ परछो ओके इज द इमेज क्लियर यस और नो मत कहबो सो एटा हला नेपाल रो माने कैपिटल काठमांडू राइट आउ गोटे तुमको मैं एटी फिगर देखेबी एटा आउ टिक क्लियर तमे बुझ पारिबो सो दिस इज नेपाल दिस इज इंडिया एंड दिस इज द डिस्प्यूटेड एरिया बेसिकली कालापानी लिपु लेक एंड लिम्पियोधुरा दिस आर द डिस्प्यूटेड एरियाज तमे जानथिबो जो गोटे रिवर जदी दीटा यू नो कंट्री को सेपरेट करूची देन सेटा सब बळे से एरिया टा हमर डिस्टर्बेंस रहइबो गोटे माउंटेन पास तमर सेपरेट करूची सेटा भी सब बळे डिस्प्यूट रही रहइबो ओके तो हियर वी हैव कैलाश मानसरोवर ओके तार लार्जर व्यूज तमे देखि परिबो तो दिस इज बेसिकली इंडिया ओके एंड दिस इज नेपाल एंड एठी तमरो अछि लिपु लेक पास टा तमरो स्टार्ट होची एंड जाय कि से मिसुजी तमरो माउंट कैलाश सहित दिस इज योर लेक मानसरोवर एंड हियर इज बेसिकली द लिपु लेक पास ओके जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रू इंपोर्टेंट तारो लोकेशन कोन किछि इश्यू होची कि नेटवर्क रे Okay, I think it is fine now. So, it is Kalapani, it is Lipu Lake Pass, and this is how the route. एबे हमें जानिबा कि एक्चुअली कंट्रोवर्सी टा कोन किंबा डिस्प्यूट टा कोन सो नेपाल हैज ऑफिशियली एक्सप्रेस्ड कंसर्न टू बोथ इंडिया एंड चाइना
regarding the upcoming Kailash Mansarovar Yatra being routed through the Lippu Lake Pass. Now जेहेतु एटा न्यूज रे अछि so Lippu Lake Pass रो geographical माने मैपिंग ता हम पे इंपोर्टेंट हे जाउचे एग्जाम पर्सपेक्टिव रो clear. Then Kathmandu has reiterated its claim that Kalapani, Limpiadhura, Lippu Lake region is part of Nepal's sovereign territory, a stance India has firmly rejected. बुझिपालो why this is the disputed zone मु तुमको कहली एटा नेपाल क्लेम करछि कि हिस्ट्री को नहीं कि एई एरिया टा तांकर बोली से क्लेम करूछि बट जदि आमे जियोग्राफिकली बफरिंग होछि ना ओके आई होप एबे ठीक अछि से मझरे मझरे कटि जाउछि आई डोंट नो व्हाई ओके सो 1960 रो इंडियन आर्मी रो प्रेजेंस तमरो अछि पिथौरागढ़ उत्तराखंड रे कालापानी पाखरे ओके गुड इवनिंग सुनीता Despite the friction, India reiterated its willingness to engage in constructive interaction with Nepal. मु जहा कहली जेहेतु नेपाल सहित हमरो फ्रेंडली रिलेशनशिप अछि तो इंडिया चाहुथुला कि किछि गोटे कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव माने भल्लो बुझामणा हो टिके हो इंटरैक्शन हो नेपाल को एई जिंसटा को सॉल्व करिया पे रिगार्डिंग दिस बाउंड्री इश्यूज ओके एंड मन रखिबो इन 2020 Nepal released a new political map incorporating Lippu Lake, Kalapani and Limpiadhura, later reflected in a revised 100 rupee note. Okay, Nepal eta karithila. Acha, same वर्ष India's construction of a road link through Lippu Lake to Tibet drew strong objections from Nepal, which termed it as a violation of its sovereignty. Okay, so eta sabu bale I think video एबे क्लियर थिबो एबे किछि बफरिंग होनी बदे चंद्र हेम्ब्रन स्वागत एबे ठीक अछि कि नै मते कमेंट को द सेम ईयर इंडिया तमर कोन गुटे रोड लिंक बनेला सेटा भी नेपाल तमर ये करथिला हला ऑब्जेक्ट करथिला सो बोथ साइड्स कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द सुगोली ट्रीटी to support their claims. Then Treaty of Sugoli is important. Hala. Treaty of Sugoli is important. केबे हेथला एटा 1816 रे आकु टिके आजि जाई कि तमो काम हला Treaty of Sugoli विषय रे टिके पढिबो ओके क्लियर ओके फाइन Treaty of Sugoli विषय रे पढिबो बिकॉज़ सेठु तमर आस्थिला Sugoli Treaty Sugoli Treaty. Okay. So, differing mainly over the origin point of Mahakali River that defines the boundary. Now, Mahakali River, mu tumko kahili, it is located to the, mane Kalapani is located to the east of Mahakali River. Kalapani ta kodi achi? Kalapani ta kodi achi? Uttarakhand re achi. That means, tamara Mahakali River kodi achi? Fir kahar seta? India rahi. जदि कालापानी अच्छी कालापान रो ईस्ट रे अच्छी तमरो महाकाली रिवर तो महाकाली रिवर कोठी रहला इंडिया रे रहला सब बले बाउंड्री रीजन्स गुडा को किछ ना किछ गोटे डिस्प्यूट तमरो चाली हिथिबो अप्रैल 2026 रे नेपाल began strictly enforcing a rule requiring customs duty on goods worth more than 100 NPR माने नेपाली रुपीस ओके I have clear eyes माने एटा कोन NPR जदि 100 NPR रो बेसी तमरो गुड्स अछि देन सेठी तुमको कस्टम ड्यूटी प्रोवाइड करिया को पड़िबो बॉर्डर रे aimed at curbing informal trade and protecting local traders माने नेपाल टिके स्ट्रिक्ट होउची से जगहटा को नेकी ओके India termed it as a pre-existing rule that but short assurances
against harassment of civilians. Okay, next देखिबा तो बेसिकली तमरो एटा इश्यू आला कोन पे एटा जेहेतु तमरो इंडिया गवर्नमेंट अप्रूव कर देला. ओके क्लियर अछि. सो कैलाश मानसरोवर यात्रा विषय टिके हमें जानिबा. इट इज अ पिलग्रिमेज तमे जानिथिबो ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू माउंट कैलाश and Lake Mansarovar in the Tibet Autonomous region of China. The Kora or the Parikrama around the Mount Kailash चारिरे जो परिक्रमा करिवे, it is a high altitude trek peaking at Dolmala Pass. Dolmala Pass is at a height of 18,600 feet and is physically demanding. जिबाटा एते सहज न. कैलाश यात्रा तमे जदि सुनिथिबो कैलाश पर्वत को जिबाटा एते सहज न. जो माने भी जाइछंती इट्स वेरी रिस्की, फिजिकल डिमांड बहुत थाए. एंड तमे माने सुनिथिबो कि जेते तमे कैलाश पर्वत पाखो को जीव तमन नख गुडा को बहुत ना संगे संगे बढ़ी जीव, चुट्टी संगे संगे बढ़ी जीव, तमे तमने तमर एजिंग ता बहुत जल्दी हे जीव. एमते भी सुनिया को पाइछु हम, राइट. एंड इट इज तो ऑब्वियसली इट इज वेरी फिजिकल माने डिमांड तार रहउची. पिलग्रिम्स आल्सो परफॉर्म रिचुअल बाथिंग in Lake Mansarovar रे गाधांती, which is one of the world's highest freshwater lakes. Okay, Mount Kailash, though lower in height than the Mount Everest. Mount Everest रो जदि height हमें देखिबा 8,849 मीटर और Mount Kailash रो तमे जदि देखिबो height हैला 6,638 मीटर. Okay, तो no doubt Mount Kailash is lower than Mount Everest, but एपर्यंत यू नो केही भी जाई नहंती माउंट कैलाश ऊपर. मानसरोवर लेक को जाई जने माउंट कैलाश ऊपर को जिबाटा एते सहज नुह जोठी शिव वास करंती बोली कोहा जाय. ओके नहीं. अच्छा, नाउ कम योर लिपु लेक पास जोटा कि आमो पई जियोग्राफिकली इंपोर्टेंट. लिपु लेक पास जदि हमें जियोग्राफिकली भी देखिबा इट इज इन इंडिया रो कोठी उत्तराखंड रे अछि. Okay, it is the shortest route to Mansarovar. तो तमे देखिबो इंडिया और चाइना बॉर्डर रो माने हमर बॉर्डर रो इट इज अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, बट रफ टेरेन एक्सटेंड्स द ट्रैक टू 200 किलोमीटर. तो जेहेतु टेरेन ता एते रफ से 50 किलोमीटर तो तमर 200 किलोमीटर भी हे जाय. ओके, इट वाज द फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट ओपनड फॉर ट्रेड विथ चाइना इन 1992, followed by Shipkila and Nathula. Okay, तो लिपु लेक पास तापर आउट एट इंपोर्टेंट कोन हैला शिपकिला पास आउट हैला नथुला पास. नथुला जलेपला तुम जानथिबो नथुला रास्ता देई की भी जाई हबो. ओके, नथुला रास्ता देई की भी तमे मानसरोवर जाई हबो, बट जदी गोटे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अछि हमें ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही देखिबा. ओके नहीं. शिपकिला टा कोठी को एरिया रे अछि, को स्टेट रे तमरो शिपकिला पास अछि पते को, बिकॉज़ नथुला तो मु कह देली इट इज इन सिक्किम विषय रे भी हम आज पढिबा गोटे सिग्निफिकेंट नंबर स्लाइड्स अछि सिक्किम विषय रे. ओके, कोन पे बिकॉज़ सिक्किम रो 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड सेलिब्रेशन चली छि एंड नरेंद्र मोदी भी जाइथिले जानथिबो तम माने. ओके, अच्छा, नाउ कम बैक. शिपकिला को स्टेट रे अछि मते को. लिपु लेक तमे देखिलो उत्तराखंड रे हैला. नथुला तमरो हैला कोडी सिक्किम रे. शिपकिला टा कोठी अछि कुह. नाउ शिपकिला तमरो खोला हितला 1994 रे ट्रेड पे, इंडिया चाइना ट्रेड पे, आ नथुला तमरो ओपन करा जायतिला 2006 रे इंडिया चाइना ट्रेड पे. ता पूर्वरु सबुटु प्रथम जोटा इंडिया चाइना ट्रेड पे बॉर्डर माने गोटे पास खोला जायतिला दैट वाज लिपु लेक पास 1992 रे टा खोला जायतिला. क्लियर. ओके, तापरे शिपकिला तापरे नथुला. शिपकिला टा कोठी मते जल्दी को. As I already said, Nathula Pass, this 1500 kilometer fully motorable route, it is one of the world's highest motorable roads, opened in 2015, easier for pilgrims, no trekking needed. Okay, Nathula connects Sikkim with China's Tibet region, okay, and is a part of the ancient Silk Route. Mount Kailash कथा मु तुमको ऑलरेडी कहली कि
बहुत गोटे sacred place एटा, not only for the Indians but समस्तଙ୍କ ପାଇଁ all over the world. It is a diamond shaped black rock peak in Tibet, sacred to देखिबो एट लेखा है not only to Hindus but also Buddhists but also Jains and Bons, माने सब रिलीजन ପାଇଁ एटा गोटे बहुत sacred place बुझ पालो. शिपकिला हिमाचल प्रदेश, good, and is the source of major Asian rivers like Brahmaputra, Sutlej, Indus, Karnali, ये सब तमरो माउंट कैलाश पाखरु ही ओरिजिनेट होंती. ओके, physical challenges, the high altitude pilgrimage कहीं कोच मो pilgrimage, okay, poses serious risk like acute mountain sickness. जेहेतु बहुत उच्चा रे ना बुझ परछ, बहुत उच्चा हाइट, जे जानि थिबो जे जाई थिबो सिक्किम वगैरह रीजन रे गुरु डोंगमार लेक जानछ एंती माने बहुत हाईएस्ट अल्टीट्यूड से गुडा तो सेठी ऑक्सीजन ता बहुत माने तुमको सफिशिएंट हे पारेनी, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेनी, तो बहुत ही प्रॉब्लम ए सब हाई अल्टीट्यूड जगह रे. तो एक्सट्रीम टेरेन तापरे तमरो माउंटेन सिकनेस रहइबो, आउ मेकिंग रिगरस मेडिकल स्क्रीनिंग एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग द जर्नी. जे भी जर्नी नबो तापे प्रॉपर मेडिकल चेकअप हैला परे ही ताको एलाउ करा जाय. ओके, परमिट वगैरह ये सब दिया जाए, देन ओनली से जाई परिबो से रीजन्स गुडा तो एते इजी न हो. फिजिकली यू हैव टू बी फिट टू गो टू दिस रीजन्स. ओके, अच्छा, एंड एज आई सेड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बॉन, ए चारिटा रिलीजन माने तमरो केमिति तांको पई माउंट कैलाश ता एते सिग्निफिकेंट देखो. तो हिंदुइज्म तमे जानि थिबो आमे एटा लॉर्ड शिव, इट इज द एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिव. लॉर्ड शिव कर बास एठी बेले आमे को तांको घर एठी. Shiva and Parvati obviously seen as the spiritual center of the universe. A dip in Lake Mansarovar is believed to cleanse all your sins. माने तमर सबु पाप धोई हे जीवो जदि तमे लेक मानसरोवर रे थरे गाधे दियो बोली कुहा जे. ओके, एंड बुद्धिज्म पर्सपेक्टिव रो माउंट कैलाश को कंगरिंग पंचे बोली कुहा जे. कंगरिंग पंचे बोली कुहा जे, प्रीशियस ज्वेल ऑफ स्नो, believed to be the abode of Demchok, symbolizing supreme beast. Now Demchok is also tanko religion hisab re it is a form of Shiva ame koi pariba, if I am not wrong. Okay, and Jainism hisab re Mount Kailash को कहा जाए Mount अष्टपद बोली कहा जाए. Sacred as the site where ऋषभदत्त तांकर जो monk थिले ऋषभदत्त सेठी मोक्ष प्राप्ति करथिले बोली कहा जाए जैनिज्म माने मानकर. ओके, एंड जदि हमें बोन रिलीजन कथा कहबा, कॉल्ड द 9 स्टोरी स्वस्तिका माउंटेन, माने माउंट कैलाश तांको हिसाब रे ना हैला 9 स्टोरी स्वस्तिका माउंटेन, रिगार्डेड एज ए मिस्टिकल एक्सिस मुंडी, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. एटा जिंदा में कहलु सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सेम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इन द इंडिजिनस बोन रिलीजन. सब रिलीजन पे माउंट कैलाश रो सिग्निफिकेंस रही छी. ओके, सो कोन करा जाय परिबा आगु को, ऑब्वियसली रिवाइव बाउंड्री टॉक्स. जेतु आमे कहिलो हमर भलो रिलेशनशिप अछि, वी डू नॉट वांट टू माने टिके आउट टिके अंका मंका रास्ता में अपने को चाहिबुनी ऑब्वियसली, बट वी हैव टू डू द बाउंड्री टॉक्स, एक्टिवेट फॉरेन सेक्रेटरी लेवल डायलॉग टू रिजॉल्व द कालापानी, लिपुले एंड लिम्पियाधुरा इश्यूज, जोटा कि नेपाल क्लेम करछि कि एटा तांकरो एज पर ट्रीटी ऑफ अंधेरा, सेटा ट्रीटी ऑफ भूली गलो कि कहितली ना, होमवर्क देछि एटा पढिबो आज, ट्रीटी ऑफ सुगोली. ओके, 1816. तो एठो ही सब ए इश्यू गुडा को ओरिजिनेट हेछि. तो एटा तमरो सेई ब्रिटिश टाइम रो एटा चले 1816 माने ब्रिटिश टाइम रो हैला. तो से माने छाड़ देले ए जिंसटा को से माने सॉल्व करलेनी, सेटा सेमति रहि गला. ओके, ध्रुव राठी बोलो कथा. So develop a joint framework for the Lipu Lake route to balance the pilgrimage access and Nepal interest. माने नेपाल को भी जहाँ दरकार हमें दबो सेरे तांको भी मन दुख करिबानी, but religious significance हमर बहुत रहउची through the Lipu Lake pass. Not only it is a means of trade but religious connections हमर रहउची through that pass, right? So that is why it is important. Recalibrate diplomacy. India should adapt to Nepal's new leadership.
नेपाल रो तो जानथिबो कोन परिस्थिति एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द गुजराल डॉक्ट्राइन by offering non-reciprocal concessions to build trust and goodwill. ओके तो नेपाल रे एबे कोन पर जेनजी वाला सब माहौल अछि तो सेमान को सहित सेमान को टाइप रो कथा वार्ता कहि कि हमको एटार गोटे इश्यू माने ए इश्यू रो गोटे सॉल्यूशन बार करिया को पड़िबो ओके is trade frictions use the intergovernmental committee to address custom tensions while balancing anti-smuggling measures with border livelihoods eta chhado boost economic integration ensure timely completion of key project jaha bhi project achi taha kemti completely mane time bound manner re complete hobo seta amro target rahiba katha ओके तो आमर भी अच्छी कि इंडिया कमिट करिछि नेपाल रो 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर आमे इंपोर्ट करिबा तो सेही गुडा को जेमति चलिया कथा सेमति चलिले बेटर ओके both nations should aggressively promote joint tourism initiatives like the Ramayan circuit जोटा कि तमरो अयोध्या रो नेपाल रो जनकपुर को कनेक्ट करूची ओके एंड द बुद्ध सर्किट जोटा तमरो सारनाथ बोधगया को लुम्बिनी सहित कनेक्ट करूची ओके and strengthen people to people ties by expanding scholarship तो माने देखि थिबो नेपाल रो स्टूडेंट रो गोटे डेथ हे जेथिला हमरो ए ओडिसा रो गोटे यूनिवर्सिटी रे ओके तो केते इश्यू सेते बळे भी हेथिला बट फिर भी नेपाल रो बहुत पिला आसी कि हमरो ओडिसा रे पढंती ओके बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट तो से ट्रस्ट बस हमें बंचे के रखिबा आउ यूपीआई तांकर भी केम जेमति यूपीआई चलीबो सेटा देखिबा while leveraging the open border issues that enable seamless movement for livelihood and marital benefits between India and Nepal. Okay, so India Nepal relationship is बहुत भलो actually uniquely characterized by an open border आम भितर सेमति किछि border issues as such नहीं right तो we are friendly neighbors तमे जदि चाहिबो बाय रोड आराम से तमे नेपाल जाय परिबो बुली के आसे परिबो किछि असुविधा नै बहुत बढ़िया तमर कनेक्टिविटी भी अछि सो से मान को सहित सेमती से टाइप रो डिप्लोमेटिक जिनस गुडा को करी कि हमको ए इश्यूटा सॉल्व करिया को पड़िबो नो व्हाटएवर मे बी द रीजन आमो पय इंपोर्टेंट कोन आमो पय एठु इंपोर्टेंट हैला ट्रीटी ऑफ सुगोली जाय के देखिबो आजी आउ लिपु लेक टा भल्लो से मैप रे पढ़ी दबो कि एग्जैक्टली वेयर इज योर लिपु लेक वेयर इज कालापानी एंड वेयर इज दिस लिम्पिया धुरा जोटा को नै कि ए टोटल कंट्रोवर्सी टा चलीची एम आई क्लियर चलो नेक्स्ट टॉपिक को आम जा बाय द वे तुमको कही थी किसी आर्टिकल पढ़िया पे पढ़छ महानदी रिवर डिस्प्यूट कथा आम लास्ट क्लास पढ़ी किसी आर्टिकल्स मु तुमको पढ़िया को कही पढ़छ ना नहीं ओके मतलब कमेंट करो देन हम एटा कंटिन्यू करथो टिल देन ओके मिशन दृष्टि इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव रो मिशन दृष्टि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च ओके पढ़िबा ऑप्टोसार कोन एक्सेट्रा हम सब पढ़िबा बट जेमति निसार पढ़थिलो ओके एसएआर रो फुल फॉर्म कोन थिला मते कहिला निसार मिशन पढ़थिलो हमें निसार एसएआर रो फुल फॉर्म कोन थिला एन रे थिला नासा आई रे थिला इसरो एसएआर रो फुल फॉर्म कोन थिला मते कमेंट रे को बिकॉज़ दिस इज आल्सो से टाइप रो गोटे सैटेलाइट ओके मिशन दृष्टि बेसिकली दृष्टि सैटेलाइट को बुझौची कोन सेटा हमें पढ़िबा आबे मिशन दृष्टि सैटेलाइट को बुझौची दैट इज ए ऑप्टोसार सैटेलाइट ओके कोन सेटा हमें पढ़िया बट मते हुआ तो फुल फॉर्म आगर एसएआर रो फुल फॉर्म कोन थिला हमें पढ़िथिलु निसार रे पढ़थिलु से सेम जिंस एसएआर फुल फॉर्म एठी भी लागू हो ओके वर्ल्ड रो प्रथम ऑप्टोसार सैटेलाइट ओके तो सेति में हमको बुझिया को पड़िबो ऑप्टोसार माने कोन बट जल्दी मते कमेंट रे को सार रो फुल फॉर्म एसएआर रो फुल फॉर्म
जल्दी अरे पढ़े ना सिंथेटिक अपर्चर रडार पढ़िनु हम एटा निसार पढ़िनु लास्ट प्रीलिम्स रे तमर क्वेश्चन पचारथिला synthetic aperture radar, right? So it is also a synthetic aperture radar, which is also drishti gote satellite जोटा कि recently launch ହେଇଛି किए करछि कोन करछि फर्स्ट देखिबा. Okay, and what is this optosar, we'll see. So mission drishti is a cutting edge dual use earth observation satellite. It is uniquely recognized as world's first optosar. India's first so important, world first माने world's first तो आहुरी important. तो world रा प्रथम optosar satellite, meaning it integrates two different types of sensor. हैला गोटे हैला तमर optical sensor रोची आ गोटे radar रोची. synthetic aperture radar जोठी भी synthetic aperture लिखाई थिबो सेठी radar लिखाई थिबो हैला. तो synthetic SAR ता हे गला तमर radar आउट रहले जे ऑप्टो तमे पढिलो, दैट इज ए सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर. तो ऑप्टो माने हला ऑप्टिकल सेंसर. ओके, ऑप्टो माने हला ऑप्टिकल सेंसर आ एसआर ता फुल फॉर्म तुमको ऑलरेडी कहली सिंथेटिक एपर्चर रडार, राइट. सो दीटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स लागि छि सेथरे टू प्रोवाइड हाई क्लैरिटी एनालिसिस रेडी डाटा. माने ये जो इमेजेस गुडा को दबो जेहेतु एटा गोटे कोन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि, सैटेलाइट रो ना हैला दृष्टि. ओके, एंड ए टोटल मिशन रो ना हैला मिशन दृष्टि. सो दृष्टि रो काम हैला से गोटे होची अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. से हमको पूरा हाई क्वालिटी रो एनालिसिस रेडी डाटा हमको प्रोवाइड करियो. माने तमे जेमते बे मोबाइल रे गोटे फोटो उठेले केते क्लियर आसे, राइट. बहुत झंझट तुमको बसिया को पड़ेनी. तो सेमिति पूरा क्लियर गोटे लेमैन जेमति से फोटोटा को देखि बहुत सारे जिंस बुझी परिबो सेमिति फोटो से हमको प्रोवाइड करिवो किए दृष्टि सैटेलाइट. ओके, नाउ मन रखिबार कथा हला किए डेवलप करिछि. ओके, डेवलपर रो ना हला गोटे स्टार्टअप जे ना हला गैलेक्स आई. एटा वेरी इंपोर्टेंट, एटा क्वेश्चन हमको पचारि पारे. ओके, गैलेक्स आई होची से स्टार्टअप रो ना ये बने छी सैटेलाइट. क्लियर, दृष्टि सैटेलाइट फैसिलिटेटेड बाय इन स्पेस. तुम जानिथिबो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. ओके, दिस इज ए प्राइवेट बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप. ओके, तो ता माने एटा इसरो वगैरह एटा करिनी, बट इन स्पेस एथरे इन्वॉल्व अछि. इन स्पेस होची प्राइवेटाइजेशन ए कमर्शियलाइजेशन काम गुडा सब करे. इट इज आल्सो ए आर्म ऑफ इसरो. बिकॉज एबे कोन होची त माने जानि सब जगह रे हम प्राइवेटाइजेशन होची. तो इसरो तो सब जिंस रे माने एते बे से फास्ट फॉरवर्ड है कि सब जिंस रे काम करि परिबनी. तो से प्राइवेट स्टार्टअप्स मानु को फंडिंग दोची, अलाउ करूची, यू नो सपोर्ट करूची, सो दैट से माने एमती किछि डेवलप करंतो सैटेलाइट जोटा कि समस्त पय बेनिफिट हबो. ओके, yes, launch vehicle. Now this is the developer name. Startup ro na launch vehicle को थरे launch करा गला SpaceX रो Falcon 9 rocket जो थरे तमरो examination हेतिला मन अछि सेही Falcon 9 रे ही तमरो launch करा गला मिशन दृष्टि को किबा दृष्टि सैटेलाइट को. ओके, सो दिस इज योर launch vehicle होची SpaceX होची कंपनी रो ना, Falcon 9 होची रॉकेट रो ना. ओके, माने से लॉन्चर रो ना जो थरे तमरो लॉन्च करा गला ए पर्टिकुलर सैटेलाइट को. एंड कोठो एटा लॉन्च करा गला कैलिफोर्निया यूएसए रो लॉन्च करा गला. एंड इट इज ए सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर. मु तुमको कहितली कि लो अर्थ ऑर्बिट माने से 400 किलोमीटर पाखा पाखी. अर्थ रो केते दूर 400 किलोमीटर पाखा पाखी. तो निसार भी से लो अर्थ ऑर्बिट को हमें पठैथिलु. ओके, निसार को भी हमें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को पठैथिलु. एटा भी हमर को ऑर्बिट को हमें पठौछु सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. दी प्रकार ऑर्बिट अछि मु तुमको कहितली
तो if this is our earth then गोटे हला इक्वेटर हमर ओके तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट गोटे रहला आ गोटे रहले तमर पोलर ऑर्बिट ओके दिस इज आवर नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल पोलर ऑर्बिट जोटा कि 90 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर रुहे आ गोटे तमर रुहे इनक्लाइंड ऑर्बिट जोटा कि किछ गोटे एंगल फॉर्म करे इक्वेटोरियल ऑर्बिट थारु ओके तो ए जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तमे जानिबो इट इज इन बेसिकली पोलर ऑर्बिट को छडा जाईची लो अर्थ ऑर्बिट को छडा जाईची पोलर ऑर्बिट को छडा जाईची सन सिंक्रोनस माने हला सन को सिंक्रोनाइज करके सेरा बुलथबो माने 24 घंटा से बुलिबो एंड हमको दिन रो डाटा प्लस राति रो डाटा भी दबो बिकॉज़ जनरली राति रे फोटो उठेबाटे त इजी नो तमे निजे भी मोबाइल तमरो नाइट मोड आजकल से आसी गलानी तथापि माने सेते क्लियर आसेनी जदि हमें प्रॉपर लाइटिंग रे गोटे फोटो उठोनु तो सैटेलाइट माने भी जदि फोटो उठेबे तांको भी सेमते प्रॉपर क्लियर फोटो उठेबनी बट जोठी भी तमरो ए सिंथेटिक एपर्चर रडार अछि बोली तमे जानिबो सी तमरो दिन रे हो कि राति रे हो भलो फोटो उठेबो आमे निसार रे भी पढिथिलु ऑल वेदर वर्षा हो शीत हो खरा हो आ डे हो किबा नाइट हो फोटो सब क्लियर उठिबो बुझ परछो तो ये भी तमरो सेही काम ही करूची सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को हमें पठेलु एंड से तमरो ऑल वेदर तमरो फोटो सब क्लियर हमको पठेबो The mission aims to overcome the limitations of traditional Earth observation by providing all-weather day and night imaging. As I said, दिन रे हो राति रे हो भलो फोटो हमको सब बेले मिलिबो by combining optical sensor and radar. Okay, दीटा जाकर डाटा को कंबाइन करा जिवो. It seeks to provide decision grade clarity for global stakeholders in sectors ranging from national security to environmental monitoring. तो environmental को monitoring भी हे गला गोटे आडू और national तमरो security काम भी हे गला गोटे आडू हला clear am I clear about दृष्टि satellite now optosar माने बुझिलो दीटा सेंसर यूज कराइची ऑप्टिकल सेंसर गोटे और रडार गोटे को रडार सिंथेटिक एपर्चर रडार रो काम हला से तमरो दिन रे हो खास करके राति रे सिंथेटिक एपर्चर रडार ता भलो काम करबो हमको इमेजेस प्रोवाइड करिया रे और दिन रे तो तमरो अछि ऑप्टिकल सेंसर ऑलरेडी लागि जे सेथरे ओके फर्स्ट सैटेलाइट वर्ल्ड रे दैट टू गोटे प्राइवेट सैटेलाइट बिकॉज़ एटा गोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाइची ऑर्गेनाइजेशन ना कोन गैलेक्स आई okay no startup ta the first satellite globally to combine electro optical sensors with synthetic aperture radar okay SAR can see through clouds and darkness मु तम कहली synthetic aperture radar कोठी भी जदी अछि से तमरो it can penetrate through the clouds and जेते अंधार हे थाउ से तमको proper फोटो तुमको दबा आउ ए जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर गुडा को लागे छी दैट प्रोवाइड्स इंट्यूटिव विजुअल डिटेल बढ़िया डिटेल तुमको पूरा क्लियर डिटेल मिलिबो ओके क्लियर अच्छा वेट केते तारो ए गुडा को एते इंपोर्टेंट नो इंपोर्टेंट कोन आई होप तुम माने नोट कर देछो इंपोर्टेंट कोन ओके किए डेवलप करिछि दृष्टि सैटेलाइट गैलेक्स आई लॉन्चिंग व्हीकल कोन थिला स्पेसएक्स फाल्कन 9 ओके एक्सियम रो भी लॉन्चिंग व्हीकल एटा ही थिला ओके एंड लॉन्च साइट कैलिफोर्निया यूएसए को ऑर्बिट को पठाउची दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट कोन पे जानछो गोटे अन्य हमरो ओपीएससी रे तो पचार थिला निसार रो फुल फॉर्म पचार दिथिला लास्ट क्लास को लास्ट एग्जाम रे आउडे को स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन एग्जाम रो प्रीलिम्स रे पचार थिला निसार तको को ऑर्बिट को छोड़ा जाइथिला सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तो मिशन दृष्टि और दृष्टि सैटेलाइट को भी हमें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को ही छाड़ीछो व्हिच इज अ पोलर ऑर्बिट ओके पोलर ऑर्बिट अच्छा ऑप्टोसार माने बुझिलो दी प्रकार सेंसर लागिछि सार अच्छा सार विषय तो हम ऑलरेडी निसार बोले पढिथिलु ओके so resolution offered a special resolution of 1.2 to 3.6 meter the highest among Indian private players spectral bands कथा जदि हमें देखिबा operates across multiple bands including X band pan RGB एगे साइंस हमर जो साइंस क्लास हेतिला जो पिला माने देखुछो लास्ट क्लास में तुम कहली गोटे मन रखिया पई हला एठी थाय हमर कोन विजिबल रेस रे तमरा आसी जाय वेब गियर राइट
एटा आर एटा विब्ग्योर उल्टा आमे लिखिबा तो एटा तमरो कहला आरजीबी माने रेड ग्रीन ब्लू तो से एरिया रे से बैंड्स गुडा को ये बेसिकली तमरो फोकस करे revisit frequency the satellite is designed to revisit the same spot every 4 days मनकर आज से भुवनेश्वर लोकेशन भुवनेश्वर रो खंडगिरी टा को कैप्चर करिछि ए पर्टिकुलर सैटेलाइट देन अगेन 4 दिन परे से जगह को ही आउथरे रिविजिट करिवो ओके से हिसाब रे तारो फ्रीक्वेंसी रखा जाइछि एंश्योरिंग हाई फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग and it delivers inherently aligned fused imagery that is analysis ready, reducing the need for complex post processing by the user. माने complex post processing जेमते करिया को न पडू तुमको जहा फोटो आसिला सेठु तुमको प्रॉपर डाटा मिल जाओ ओके ताको प्रोसेसिंग करवा को जेमते न दरकार पडू दैट इज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट नाउ मन रखिबो गोटे कथा जस्ट अ सेकंड एठी लिखाई छी ए आर्टिकल ता जेते बळे एटा तुमको पीडीएफ मिलिबो एटा पढिबो ए मिशन रो ना हला CAS 502 मिशन ओके कैलिफोर्निया रो लॉन्च हेची नाउ मिशन दृष्टि तो हमें कहू दृष्टि सैटेलाइट बट एथेरे आ छडा माने जो फाल्कन 9 रे ए सैटेलाइट छडा आहुरी 44 टा सैटेलाइट पठा जाइथिला माने 44 टा अलगा पेलोड पठा जाइथिला टोटल 45 पेलोड पठा जाइथिला हैला को मिशन रे ए मिशन रे CAS 502 एटा न पचरी पारे बट फिर भी तो 45 टा पेलोड रो ए दृष्टिटा होची गोटे पेलोड जोटा कि हमरो ए पर्टिकुलर स्टार्टअप तमरो बनेछि गैलेक्सी आई ओके गैलेक्सी आई तो बुझ परलो कोन कोन मन रखिबो डेवलपर रो ना एंड ऑब्वियसली इन स्पेस को सपोर्ट करिछि इन स्पेस रो फुल फॉर्म देखे नबो लॉन्च व्हीकल कोन थिला कोठु लॉन्च हेतला को ऑर्बिट को लॉन्च हेतला आ को दीटा जिंस एथरे लागि छि दीटा सेंसर ऑप्टिकल सेंसर आ उडा हला रडार ओके रडार रो काम कोन ऑप्टिकल सेंसर रो काम कोन आमे सब पढि देलु am I clear now okay so it addresses the cloud cover limitation माने जेहेतु सिंथेटिक एपर्चर रडार लागि छि सेटा तो तमरो क्लाउड को पेनिट्रेट करके भी तमरो भलो फोटोज गुडा को दे दबो सो सेही लिमिटेशन टा को हमें हटे देछु मेकिंग इट इनवैल्यूएबल फॉर ट्रॉपिकल रीजन्स इंडिया होची उटे ट्रॉपिकल रीजन तो इंडिया रो प्रॉपर मॉनिटरिंग हमें एथरे करि परिबा सॉरी एज अ डुअल यूज सैटेलाइट it supports critical applications in defense maritime monitoring disaster management infrastructure planning निसार जहा सब काम गुडा को थिला से सब जिंस ये करला बट एति के तमे मते पचेरि बेर गोटे डाउट तुमको आस्थबो कि मैडम निसार भी तो हमें पढिथिलु हैला तो निसार रो काम भी तो या थिला बट निसार तमरो ऑप्टिकल सेंसर लागि थिला कि नाही सेत्र खाली रडार थिला नासा इसरो रो गोटे जॉइंट मिशन थिला बट सेत्र रडार थिला ऑप्टिकल सेंसर किछि लागि नथिला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर जोटा कि एथरे लागि छि वर्ल्ड रो प्रथम जदि हमें कहि परबा डुअल माने ऑप्टिकल सेंसर भी लागि छि प्लस रडार भी लागि छि सेमतिया डिवाइस सेमतिया सैटेलाइट एटा वर्ल्ड रो फर्स्ट के बनै छि गैलेक्सी ओके एम आई क्लियर अरे होना नहीं किछि तो माने मैसेज करो माने कमेंट करो बुझी हो ना नहीं जीवा नेक्स्ट टॉपिक India's new helicopter launched naval missile hits different NASM SR missile okay now एगुडा को पढु छी एग्जाम रे तो we cannot skip such type of current affairs defense related space related एटा हमको निहाती कवर करे कि जीवा को पड़ेबा राइट okay so India achieved a significant milestone in indigenous maritime strike program by successfully conducting the maiden salvo launch of the naval anti-ship missile short range NASM SR full form hela naval
एंटी शिप मिसाइल एनएसएम रो नावल एंटी शिप मिसाइल आ एसआर रो फुल फॉर्म हैला शॉर्ट रेंज ओके फ्रॉम ए सी किंग हेलिकॉप्टर नाउ को हेलिकॉप्टर रू लॉन्च कराइतला सेटा टिके देखि दबो सी किंग हेलिकॉप्टर so eta kono basically it is an advanced air launched anti ship missile system designed to replace aging foreign origin missiles like the British Sea Eagle eta tame bahut suni thibo British ro a particular missile ro na British Sea Eagle तो सेटा बहुत पुराना हे गेलानी ए टाइप रो मिसाइल गुडा को हैला तो सेठी में सेमान को रिप्लेस करिया पे फॉरेन मिसाइल प्लस पुराना फॉरेन मिसाइल को रिप्लेस करके आमे केमती इंडिया मेड मिसाइल गुडा को यूज करि परिबा सेटा हमरो ऑब्जेक्टिव सो दिस इज इंडिया's फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम माने हेलीकॉप्टर रो लॉन्च हेथिबा प्रथम एंटी शिप मिसाइल सेमती पर्टिकुलर किछि ना दिया हेनी बट एटा ही तमरो ना बेले तमे कहि परिबो नावल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज एनएसएम एसआर नाउ एटा तमरो लास्ट वीक एटा भी टेस्ट हेतिला एटा तमे जो देखितो एटा होची एनएसएम एमआर एमआर इज मीडियम रेंज ओके एंड एटा हला शॉर्ट रेंज ओके किए डेवलप करिछि दैट इज इंपोर्टेंट तो इंडिया रो प्रथम किछि भी अगेन बारंबार मो कहे इंडिया रो प्रथम इंपोर्टेंट तो इंडिया रो प्रथम नेवल एंटी शिप मिसाइल हेलीकॉप्टर रो छडा हेतिबो एटा हला प्रथम एग्जांपल किए एटा को डेवलप करिछि रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ओके आरसीआई हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विथ डीआरडीओ लैबोरेटरीज ओके टू प्रोवाइड द इंडियन नेवी with a high precision indigenous strike capability against maritime targets and enhancing the Atmanirbhar Bharat initiative in defense. बुझिबेला? Okay. So it is powered by a solid propellant system. दी प्रकार system था हमर solid propellant system, liquid propellant system. Again difference जानिबार अछि तो kindly playlist RAYACADEMY रो YouTube रे तमरो प्लेलिस्ट अछि प्लेलिस्ट रे तमरो थिबो प्रीलिम्स रिवीजन और लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्लासेस गुडा को रिवीजन क्लासेस हेतिला सेथरे स्पेस टेक्नोलॉजी रे गोटे 3.5 घंटा 3 आवर 52 मिनिट्स रो गोटे वीडियो अछि सेथरे एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हैला सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम कोन लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम कोन जदी जानि ना से वीडियोटा देखि दबो सो दिस इज ए सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम ओके फीचरिंग एन इजेक्टेबल बूस्टर फॉर लॉन्च and a long burn sustainer for flight. Okay, so it is capable of striking target at the range of approximately 55 km. जेहेतु short range तो 55 km रो target को hit करि परिबो with a subsonic sea skimming flight profile to avoid radar detection. माने अन्य को enemy रो radar को easily detect करि परिबो नाही. Okay, demonstrate waterline hit capability. Specifically targeting a ship's hull at the waterline to cause maximum flooding and structural failure. माने जोटी भी strike करिवो सेठी बहुत high माने level रे तमर destruction confirm. Okay. Guidance and navigation utilizes a fiber optic gyroscope based जो माने PUBG खेलथिबो जानथिबो gyroscope कोन माने तो fiber optic gyroscope based inertial navigation system अछि radio altimeter अछि ये सब जिनस अछि एडवांस्ड आईआईआर सीकर अछि इंफ्रारेड सीकर हैला फॉर माने प्रॉपर ए सब जिनस अछि कि टारगेट ता न मिस हे जो प्रिसाइजली जो टारगेट को तमे टारगेट करिया को चाहो से टारगेट ता जिन सेट करी कि सेठी ही हिट करिवो एंड बहुत हिट माने डेंजरस रहिबो एटा ओके तापरे आउ कोन माने एग्जाम पर्सपेक्टिव रो यस को हेलीकॉप्टर रू लॉन्च करा जायथिला प्राइमरी लॉन्च फ्रॉम द सी किंग हेलीकॉप्टर विथ फ्यूचर प्लान फॉर इंटीग्रेशन ऑनटू MH-60R Seahawk एंड ए सब माने फ्यूचर ए ध्रुव हेलीकॉप्टर रू भी लॉन्च करिवार संभावना अछि बट वर्तमान एटा सी किंग हेलीकॉप्टर रू लॉन्च करा जायछि किए बिल्ड करिछि इंपोर्टेंट रिसर्च सेंटर इमारत along with DRDO collaboration रे एटा बिल्ड करछन्ते ओके इंडिया रो प्रथम इंडिजिनस डेवलप्ड मिसाइल जोटा कि तमरो हेलीकॉप्टर रू तमे लॉन्च करि परिबो एंटी शिप मिसाइल जोरा हेलीकॉप्टर रू लॉन्च करि परिबो एंड दिस इज शॉर्ट रेंज ओके
So successful launch of 2 missiles in quick succession from a single platform validates a critical operational capability for the real world. माने गोटे टाइम रे तमरो दीटा मिसाइल गोटे पर गोटे सक्सेसफुल हेला and गोटे प्लेटफॉर्म रु it marks a major shift from dependency on British origin sea eagle जोटा को हमें आगुरु बहुत डिपेंडेंट रहउथलु गोटे फॉरेन ओरिजिन रो यू नो मिसाइल ऊपर सी ईगल ऊपर वर्तमान आमे निजर सेमते गोटे बनै देछु जोटा कि होछि तमरो NASM SR किछि ना नाही वर्तमान पर्यंत बट NASM SR एंड दैट टू गोटे स्टार्टअप प्लस MSME रो कोलैबोरेशन है माने DRDO गोटे स्टार्टअप रो कोलैबोरेशन एटा बना हेछि प्राइवेट स्टार्टअप सो दैट इज इंपोर्टेंट ओके बुझिला ओके नेक्स्ट एटा कोन पे मो रखी छी कोन त कहलो तुमको तो पचारली कोन कोन करंट अफेयर्स लास्ट वीक रा थिला किछ कहि पालनी एबे एटलीस्ट कुह ओपेक ता कोन पे न्यूज रज ओपेक और ओपेक प्लस दीटा डिफरेंट ओके ओपेक कोटे अलगा ओपेक प्लस परे हेतिला दैट इज डिफरेंट जेमदी ब्रिक्स प्लस ओके तो ओपेक प्लस ता इंपोर्टेंट कोन पे न्यूज रे थिला मते एतिकी को खाली So this is an international organization. International organization रे भी questions पढुची हमर. We know that. को जल्दी को. Why OPEC is in news? Or why OPEC plus is in news? कौन किसी रेस्पॉन्स नहीं सीरियसली जानी न ओपेक कौन पे न्यूज रे थिला ना मैंने एमिति तो मेसेज कहा को कला बेले पूरा टप 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 संगे संगे मेसेज कर दउछ तुम गटे चैट करिया पे तो सुविधा होची क्लास रे गोटे कथा पचला बेलू तुमको एठी रिप्लाई देबा को असुविधा हो जाउछ आ जदी जानि न कहबो मैडम जानि नु कि तुम कोन तुम जाई कि तुमको मारी तुम जोटी बसछ किछि तो कर परिबेनी सो अबू धाबी okay increasing price of oil okay that is also one topic हम कहि परिबा but main हला अबू धाबी एग्जिट कर देला ओपेक for an extent of peak oil okay एथि स्टेट ऑफ हॉर्मस ए सब जिनस हमें पढ़ी सारछु स्टेट ऑफ हॉर्मस कोन पे न्यूज रे थिला कोन एक्सेट्रा ऑयल प्राइसेस गैस प्राइसेस सब एपट सपोर्ट हेछि that is fine but Abu Dhabi was a member of OPEC and से exit कर देछि वर्तमान so OPEC कोन आगो देखो United main हला United Arab Emirates announced its withdrawal from the organization of the petroleum exporting countries OPEC रो full form हला organization of the petroleum exporting countries तो जो countries गुडा को petroleum export करंते से माने ही थिबे से particular bodies रे माने particular तमरो organization रे can you tell is India a member of OPEC कोइ पटिबो कि OPEC रो इंडिया गोटे मेंबर अछि कि ना नाही is India a member of OPEC yes or no सेटा को मते तो वर्तमान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्विट कर देछि OPEC and the OPEC plus alliance effective from 1st May तो 1 तारिख रु ए 1st May जो गला 1st May रु से एग्जिट कर देछि OPEC रु the landmark decision marks a major shift in global energy geopolitics threatening to weaken the historic oil cartels bargaining power okay so Tithi is saying India is a member of OPEC आउ के ट्राई करिया को चाहू छ आउ के मते रिप्लाई करबो is India a member of OPEC
yes or no एतिके लेखो खाली OPEC होची गोटे permanent intergovernmental organization created at the Baghdad conference in 1960 केबे create हिथिला 1960 रे को conference रे Baghdad conference okay by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. So these are the founding members हमें कहि परिबा. Mandate थिला to coordinate and unify the petroleum policies of its member countries and ensure the stabilization of oil markets. Okay, Swagat is saying no. Varsha is saying yes. Okay. So United Arab Emirates has been a highly influential member since the joining in 1967. UAE join केबे करथिला 1967 रे. OPEC form केबे हिथिला 1960 रे. Okay. Later representing the entire federation. Following the US exit, OPEC is left with 11 active members. Okay. OPEC रे वर्तमान 11 active members. किए Algeria, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia and Venezuela. इथे कोठी भी इंडिया रो ना अछि की इथे कोठी भी इंडिया रो ना अछि की ओपेक रे नहीं. So India is not a member of OPEC. OPEC कौन जी एक्सपोर्ट करंती पेट्रोलियम बाहर देश को आमे तो पेट्रोलियम वर्तमान पर्यंत तो आमे इंपोर्ट ही करूछु हैला आमे वर्तमान पर्यंत से एक्सपोर्टिंग कंट्री रो लिस्ट रे आसी नाहु बुझ परलो. सो इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक बुझो. ओके तो ओपेक सरला ओपेक के भी फॉर्म इतले 1960 रे. वर्तमान ओपेक रे केतरा मेंबर्स 11 जन मेंबर्स अछन आगुरु 12 जन थिले यूएई जो एग्जिट कर देला. सो नाउ इट इज 11 मेंबर. ओके ओपेक प्लस तमरो फॉर्म हेथिला 2016 रे बहुत रिसेंटली. ओके 10 वर्ष तले तमरो ओपेक प्लस फॉर्मेशन हेथिला एंड इट इज एन अलायंस बिटवीन ओपेक ओपेक माने हमें बुझिबा ए जेति के मेंबर्स तमे एठी पढिलो दिस आर ऑल योर पार्ट ऑफ योर ओपेक. तो ओपेक माने ओपेक रो मेंबर माने भी रहबे ओपेक प्लस रे. ता छडा आहुरी 10 टा अदर oil producers माने एथरे भी रहिबे. ओके टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग ऑयल प्राइसेस ड्यू टू यूएस शेल ऑयल ग्रोथ. ओपेक प्लस रे के अछंती ओपेक प्लस रे केते जण मेंबर 10 जण मेंबर. दोज आर आल्सो ऑयल प्रोड्यूसर्स. से 10 जण मेंबर के अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुदान, सुदान. तो ओपेक प्लस रे भी इंडिया अछि की नहीं. ओपेक रो भी मेंबर नहीं इंडिया. ओपेक प्लस रो भी मेंबर नहीं इंडिया. एम आई क्लियर. एटा ही स्टेटमेंट रे पचार दबो. ओपेक इंडिया इज ए मेंबर और फाउंडिंग मेंबर और मेंबर व्हाटएवर इज ऑफ ओपेक और ओपेक प्लस. ओपेक रो कि ओपेक प्लस रो इंडिया मेंबर नहीं. ओके ओपेक प्लस roughly produced 40% of the world's crude oil and accounts for about 60% of the internationally traded petroleum. Crude oil और petroleum रो ये तमरो प्रोड्यूस करे एटा. अच्छा मेन कथा ला यूएई एग्जिट कोन पे कला. द यूएई डिसाइडेड टू एग्जिट ओपेक प्राइमरीली ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव प्रोडक्शन quotas that limited its ability to utilize its expanded oil capacity even as it aims to reach 5 million barrels per day by 2027. तो UAE रो एम थिला कि से एतिकी पर डे से एक्सपोर्ट करियो बट सेथरे लिमिटेशंस लगे दोतला ओपेक फॉर व्हिच UAE वाज नॉट हैप्पी. तो सेति पे से एग्जिट कला. एट द सेम टाइम बिकॉज़ UAE पाखरे तमरो कैपेसिटी अछि एक्सपांडेड ऑयल कैपेसिटी ता पाखरे अछि ता बादे भी ताको अलाउ करा जाउ नथला. ओके India is not a member. At the same time, UAE is pursuing an energy transition strategy
that focuses on maximizing the oil revenues in the short term before global demand shifts towards renewable. तो एबे कोन ग्लोबल डिमांड जेत हमें जानि छु ऑयल गैसेस प्राइसेस गुडा को बढ़ी जाउची तो हमें रिन्यूएबल्स आडो को जाउछु डिमांड ता सेपट आडो को शिफ्ट होची तो एटा को पूरा पूरी शिफ्ट हबा पूर्वरु से तार ऑयल रेवेन्यूज ता को बढ़ाइबार तार थिला बिकॉज़ ता पाखरे कैपेसिटी भी अछि ता पाखरे पावर अछि प्रोड्यूस करूची सब करछि देन से कोन पय एक्सपोर्ट करबेनी अधिकार आ तार रेवेन्यू कोन पय जनरेट से करबेनी ओके सो जेहेतु से ओपेक रो रेस्ट्रिक्शंस अंडर रे रही जाउतला तार रेवेन्यू सेति जनरेट हेई पार नथला यूएई रो प्लस ता ऊपर एबे बहुत हमला भी हेई छी तमे जानथिबो सो ओपेक्स कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग including the presence of Iran further constrained the US ability to respond independently to evolving geopolitical and marketing conditions. तो जहाँ भी war like situation हला obviously that is affecting these members also. हाँ कि नहीं because सेथरे ईरान रो पावर सेठी देखेबो because तमे जति देखिबो ईरान was in the founding member list जबे OPEC found हेतिला सेबे टू ईरान अछि but UAE टा later join कला 1967 रे join कला ओके तो obviously पावर टा ईरान हाथ रे तो ईरान जहा कहिबो गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि सेठी जहा पाखरे पावर थिबो से ता हिसाब रे जिंस गोटा को चलीबो ना तो जोथरे कि UAE तमर खुशी नथिला सेठी पे से छाड़ देला ना एबे से छाड़ी देला पर कोन इंपैक्ट परबो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर ईरान भाबी नथिबो कि यूएई छाड़ी देबो बोली ना राइट तो ईरान माने जहां भी हो ई ऑर्गेनाइजेशन ऊपर इंपैक्ट कोन पड़िबो इन 2025 यूएई रो खाली माने यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन ओपेक जेति कि ओपेक कंट्रीज अछंती सेटु फोर्थ हाईएस्ट माने लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर से थिला जे कि तमरो टोटल माने ओपेक रु जेति कि प्रोड्यूस होची 11% हमरो आस्थला Emirates. Its oil production capacity is estimated at 4.2 to 4.5 million barrels per day. So the exit is expected to weaken the OPEC's ability. Obviously, से छाड़ देला माने OPEC टा जेति के मजबूत थिला एबे टिके वीक हे गला. Okay. India पे कोन हे परिबो? For India, this could bring economic relief through lower oil prices and reduced inflation, along with greater availability of oil supplies in the global market. Okay, so maybe एबे जेतु से ओपेक छाड़ देला ता माने नुहो कि से तारो एक्सपोर्ट ता कमे देबो एबे तो से तारो एक्सपोर्ट ता को बढ़ेबो किए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बुझ पर एक्सपोर्ट ता बढ़ेबो ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कथा देखिया कोन हो से हिसाब रे हम ए पॉइंट ता को वैलिड करि परिबा ओके ने एबे त हम सिंथिंग कहि परिबानी अच्छा तो एटा तमे देखथो म तुमको कहली ये होची हमर फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर थिला एज ऑफ 2025 जेति के भी तमरो एठी कंट्रीज अछन तमे देखु जो दिस आर ऑल योर ओपेक रो कंट्रीज माने ओपेक रो मेंबर्स हैला तो सबटु अधिक ऑयल प्रोड्यूस किए करे सऊदी अरेबिया अराउंड 34% देन इराक देन ईरान पर आस्थला दुबई तो कहि परबे ना हम यूएई ओके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तापर पर तमे देखु सबडु गैबन गिनिया ए सब समस्त अछंती ओके ओके किछ डाउट अछि बेसिकली ओपेक कोडी फाउंड हितला केबे फाउंड हितला ओपेक प्लस केबे फाउंड हितला ओके के मेंबर्स अछंती इंडिया मेंबर अछि कि नाही दैट इज इंपोर्टेंट इंडिया मेंबर नाही हमें ऑलरेडी देखिलु एटा INS महेंद्रगिरी INS Mahendragiri 6th Nilgiri class frigate joins the fleet boosting naval power acha so recently the INS Mahendragiri was delivered to the Indian Navy at Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai. Okay, so it is the 6th ship of the Nilgiri class frigate. Nilgiri class तुमने जानते हो, है ना? तो तार 6 number ship और 6th generation रो ship हमें कोई बेरे it is Mahendragiri. It was designed by Warship Design Bureau. It was built at Mazagon Docks.
Shipbuilders Limited, which is in Mumbai. Okay, so design ke karthila kouthi build heithila au kona these ships are configured with combined diesel or gas propulsion plants comprising a diesel engine, gas turbine, e sabu jinsa lagi chi technical jinsa am pe darkar nahi. Okay, armaments jodi ame dekhiba kon kon tar अछि weapon अछि sensor अछि anti surface तमरो warfare system गुडा अछि anti air warfare system अछि anti submarine warfare system अछि सब प्रकार warfare system सेठी अछि. So this is your INS Mahendragiri. Now this is the 6th class of project 17A Nilgiri class जोटा हम कहूची सेटा तमरो represent करछि कोटा प्रथम ship ए 17A frigate रो ए टोटल माने battalion रो प्रथम ship थिला तमरो INS Nilgiri हैला सेही माने जनरेशन माने कहि परबा हम सेही फैमिली रो फिर INS हिमगिरी आसिला INS उदयगिरी सब ना तमे सुनिथिबो INS तारागिरी and INS विंध्यागिरी. So 1 2 3 4 5 INS विंध्यागिरी परे right now it is INS Mahendragiri. Okay, सेदी पे तुमको कुआ गला it is the 6th ship of the Nilgiri class. Nilgiri class को project 17A बोली भी कुहा जाए project 17A frigate माने हमें एमान को बुझिबा. Okay, so P-17A ships are fitted with an advanced weapon and sensor suit. Okay, बहुत सारा advanced weapon थाए, sensor थाए, radar थाए, तमरे इथरे तमे ब्रह्मोस supersonic cruise missile आउ थरे पचारि भी supersonic माने मार्च नंबर केते supersonic रो मार्च नंबर केते जल्दी को ब्रह्मोस is a supersonic cruise missile एटा भी तमे एटी कैरी करके नहीं परिबो बराक long range surface to air missiles कैरी करके नहीं परिबो. ओके, सब प्रकार एडवांस्ड मिसाइल्स गुडा को आमे एई फ्रिगेट्स रे कैरी करके नहीं परिबा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिया जल्दी जल्दी देखिया मत को जल्दी को बाय द वे सुपरसोनिक रो मार्च नंबर केते. सो इंडिया रो प्रथम अगेन इंडिया रो प्रथम इंपोर्टेंट India's first green methanol plant to turn Kutch's most invasive weed into marine fuel. Okay, so India रो प्रथम green methanol plant कोठी खोली ची that is important. गुजरात रो दीनदयाल पोर्ट रे एटा खोला जायछि. ओके, और कांडला पोर्ट तमे जो कहितो सेटा खोला जायछि सेठी खोला जायछि इंडिया रो प्रथम ग्रीन मेथनॉल प्लांट. ना एथरे गोटे वीड रो नाटा मन रखिबो प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा हैला. एटा होछि बेसिकली गोटे इन्वेसिव वीड. तो ताको यूज करिके ताको गोटे मेराइन फ्यूल रे कन्वर्ट करिया पे चेष्टा करा जायछि. बुझ परछो? March number 5. Good, Mahendra Mahanti. So India is set to establish its first green methanol plant at Kandla using the invasive plant Prosopis juliflora as the feedstock. Okay, the project aims to produce clean marine fuel and supports India's transition to green shipping. तो ए श्रब रो नाटा आमे निहाते मन रखिबा प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा. ओके, सेरो कि माने बहुत ही तमरो माने कोठी देखा जाए कच्छ रो बनी ग्रासलैंड बहुत इंपोर्टेंट. कच्छ रो बनी ग्रासलैंड रे तमे एई श्रबटा को मोस्टली देखिया को पाओ. इट इज सेट टू बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर इंडियास प्रथम ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट. ओके, सो ए जो प्लांट बना होची तमरो दीनदयाल पोर्ट authority द्वारा बना जाउची will have an initial capacity of 5 ton per day and use gasification technology to convert biomass into syngas. Syngas माने हमें H2CO CO2 ए गुडा को हमें syngas बोली भी कहू, which is then processed into methanol. तो बेसिकली बायोमास टा को syngas रे कन्वर्ट करा जाय. से syngas टा को परे परे तमरो मेथनॉल को कन्वर्ट करा जाए. एटा कोठी हबो तमरो मेथनॉल प्लांट रे हबो. तो इंडिया रो प्रथम ग्रीन मेथनॉल प्लांट खोला जायछि कोठी कांडला गुजरात रे. ओके, इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट with future plants expected to scale up to
100 to 500 tons per day. तो वर्तमान तो एतिकी कैपेसिटी अछि 5 टन पर डे, बट फ्यूचर रे 100 रु 500 टन पर डे पर्यंत तार कैपेसिटी को इंप्रूव करियार कार्यक्रम भी अछि. ओके, the project supports India's push for green ports and clean shipping fuels, reduces dependence on imported fossil fuel. बुझिपार आगुरु आमे कोन आमे सब जिंस रे ए जिंसटा को काटिया पे चेष्टा करूछु. इंपोर्टेड जिंस गुडा को न यूज करिके केमते आमे इंडिजिनस जिंस यूज करियो, माने जोटा आम पाखरे ऑलरेडी अछि. तो आम पाखरे ऑलरेडी अछि कोन प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा, ताको ही यूज करके कोन पे आमे मेथनॉल बनेबानी. बुझिपार आमे काहे कि फॉसिल फ्यूल गुडा को यूज करिवा जोटा कि आमे बाहरु आनुछु. बुझिपार and aligns with the International Maritime Organization goal for achieving net zero emission in international shipping by 2050. International shipping रे भी माने IMO जोटा International Maritime Organization तांकर भी किछि गोल्स अछि. तांकर गोटे गोल हला कि by 2050 सेमान को भी net zero emissions करियार अछि इंटरनेशनल शिपिंग रे. तो ता गोल टा को भी कंट्रीब्यूट करिवो ए पर्टिकुलर जिंसटा जदि हम फॉसिल फ्यूल यूज न करिकि ए व्हीट टा को यूज करिवा मेथनॉल टा को प्रोड्यूस करिवारे. ओके ओके, so thereby promoting the adoption of green fuels like methanol. So green methanol basically kaun, it is a low carbon renewable liquid fuel and chemical feedstock produced from biomass and or green hydrogen. Hala? So it is sustainable net zero alternative to conventional fossil based fuels, capable of reducing the greenhouse gas emission by 60 to 95%. ओके, तो फॉसिल फ्यूल जदि आमे न यूज करिकि तार अल्टरनेटिव हिसाब रे जदि आमे किछि यूज करि परिबा, देन इट विल बी मिथानॉल. ओके, माने कन्वेंशनल फॉसिल बेस्ड मिथानॉल रो एटा होजी गोटे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हला ग्रीन मिथानॉल. प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा कथा जदि आमे कहबा, इट इज अ मेक्सिकन ओरिजिन इन्वेसिव श्रब that was introduced in India during 1920s and later widely expanded in Gujarat in 1961 to check desertification. जेहेतु बहुत डेजर्ट एरिया हे जाइथला तो सेति पे आमे एटा को माने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा जाइथला गुजरात रे 1961 रे. It is known by different local names such as गांडो वावल, गाली कोनिमु गांडो वावल माने हैला गुजरात रे तो गांडो एमती माने दिन को 100 थर कहउथबे हैला. तो गांडो वावल इज बेसिकली गोटे लोकल नेम गुजराती माने यूज करंती. नॉर्थ इंडिया रे तमे ए पर्टिकुलर प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा को बिलियाइती किकर बेली भी कहंती, तमिलनाडु रे बेली कातन बेली भी कहंती. ओके, सो ओवर टाइम इट हैज एग्रेसिवली स्प्रेड अक्रॉस द बनी ग्रासलैंड, क्राउडिंग आउट नेटिव ग्रासेस, reducing the biodiversity and degrading the fragile ecosystem. माने गोटे जिंस अत्यधिक हे गेले भी से जगह को से नष्ट कर दबो ना. इनवेसिव कथा माने बुझ परछो, जोटा कि नेचुरल ग्रासेस अछंती, सब प्रकार स्पीसीज थांती, तमे समस्त को उडे दे के निजे ही पूरा राजा भले स्प्रेड हे जीवो पूरा, देन दैट इज वी कॉल्ड एज इनवेसिव. हला, तो जोटा कि बहुत हानिकारक हे जाय. सेही जिंसटा को आमे केमिति प्रोडक्टिवली यूज करि परिबा ग्रीन मिथानॉल बनाइबारे, सेटा थिला ए पर्टिकुलर जिंसर मेन एम. ओके, सो कोन कोन हमर रहले बेसिकली लोकेशन कोठी, इंडिया प्रथम ग्रीन मिथानॉल प्लांट कोठी बना जायछि, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्तमान पय 5 टन पर डे. किए डेवलप करी जी, थर्मक्स एंड अंकुर साइंटिफिक. ओके, एंड फीड स्टॉक, फीड हिसाब रे हम कोटा यूज करूछु प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा, आ नाडा मन रखिबो. अदर बायोमास पे तम एठी यूज करूछो बैगेज एश आ कॉटन स्टॉक सहित प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा भी यूज करा जाउछि. ओके, अच्छा, एटा गोटे तमरा क्वेश्चन थिला, व्हाई इज द प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़, 2018 रो आईएएस क्वेश्चन. ओके, इट प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा थरे ऑलरेडी क्वेश्चन रे तमरा माने एग्जाम रे पढी सारछि. ट्राई टू आंसर दिस. एबे ही तुमको मु कहली इनवेसिव रो माने कोन,
वो जल्दी को आंसर को वेट करछि म कोन पे वेट करछि तुम भाबछ जल्दी yes good स्वागत it will be B it tends to reduce the biodiversity in the area which it grows है जो जो एरिया रे से ग्रो करे से तार नेचुरल इकोसिस्टम टा को डिस्टर्ब कर दिए जो गुडा को ऑलरेडी से अछंती सेमान को पूरा तांको गुडा कंपटीशन भाबी कि से निजर ग्रोथ टा को पूरा एक्सपांड कर दिए से पर्टिकुलर एरिया रे तो बायोडायवर्सिटी टा को से रिड्यूस कर दिए ओके दैट विल बी द आंसर ओके सो एज आई सेड सिक्किम रो एटा लास्ट टॉपिक हमें पढ़ देबा आउ जहा टॉपिक रहइबो हमें नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करबे एटा हमें लास्ट टॉपिक ता आज ओके जेतु प्रधानमंत्री मोदी जाइथिले एंड सिक्किम रो 50th ईयर ऑफ स्टेटहुड सेलिब्रेशन कराई जे ता विषय रे हमें ओवरऑली टिके आउटलुक कर देबा तो दिस एटा देखा जाउची दिस इज आवर सिक्किम बहुत ही सुंदर जगह मु रिसेंटली जाई के आछि एंड सत्तरे माने मो मन छुई गला जगहटा हला किछि जगहटा मु जाई पल्लिनी because of this weather but still बहुत सुंदर जगह so मु entirely मु तो नॉर्थ सिक्किम बुल देजी त माने बुलना जदी जाओ जल्दी जाओ बुली के आसेओ हला माने एग्जाम सरले जिवो एबे नो एग्जाम पे प्रिपेयर करो एबे पढोनी अच्छा so this is your north sikkim east sikkim south sikkim west sikkim छोटो जगहटा but बहुत ही critical जगह obviously because here you have नेपाल सेठी अछि हमरो चाइना हला चाइना बॉर्डर एरिया रे अछि एठी तमरो भूटान भी रहिला एठी बुझ परछ अच्छा सो जो गैंगटॉक ता तमे सुनि थिबो गैंगटॉक द कैपिटल ऑफ सिक्किम ईस्ट सिक्किम रे रहिला गैंगटॉक एंड दिस इज एंटायरली योर नॉर्थ सिक्किम एंड रिसेंटली गुटे लैंडस्लाइड रू तार बहुत गुटे इंपोर्टेंट ब्रिज पाखो एरिया टा भी भांगे जायतिला तो सेति मै भी एटा इंपोर्टेंट बिला में कहि परिबा So Prime Minister recently participated in the closing ceremony of Sikkim's 50th year of statehood celebration in Gangtok. During the event, he lauded Sikkim's natural and organic farming model serves as a template for the entire country. Sikkim टाको organic state बोली भी कहा जाए because से माने जहाँ भी vegetables वगैरह use करंती सब organic farming थ्रू ही use करंती chemical based किसी भी जिंस से माने use करंती नहीं ओके सो सिक्किम स्टेटहुड रो की फैक्ट्स कोन चोग्याल डायनेस्टी तो सिक्किम टा इंटीग्रेट हैला जब इंडिया रो ता पूर्वरु इट वाज अ पार्ट ऑफ द चोग्याल डायनेस्टी सो बिफोर इट्स इंटीग्रेशन इनटू इंडिया सिक्किम वाज एन इंडिपेंडेंट हिमालयन किंगडम रूल्ड बाय द नामग्याल डायनेस्टी whose monarch were known as चोग्याल्स ओके सो नामग्याल डायनेस्टी थिला नामग्याल डायनेस्टी रो तमरा मोनार्क मानको आमे चोग्याल्स बोली भी कहउथलु governed the region as a hereditary monarchy from 1642 रो 1975 so आमे इंडिपेंडेंट के पहलू 1947 बट सिक्किम इंडिया रे इंटीग्रेट के पहला 1975 रे तो ऑलमोस्ट माने ऑलमोस्ट 28 इयर्स परे से इंटीग्रेट हेथिला so ब्रिटिश टाइम रे किछरा ट्रीटीज निहाती ब्रिटिश माने थिले माने तांको टाइम रे बहुत गुडा ट्रीटीज हेतिबो सो ट्रीटी ऑफ तितालिया मन रखिबो ट्रीटी ऑफ तुमलोंग ए दिरा मन रखिबो ट्रीटी ऑफ तितालिया 1817 रे हिथिला ग्रांटेड द ब्रिटिश अथॉरिटीज स्ट्रेटेजिक कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एडवांटेजेस इन द रीजन ब्रिटिश मानबो माने पूरा तांकर कोन ग्रांट करा हेतला ब्रिटिश अथॉरिटी माने तांकर एटी कमर्शियल आ पॉलिटिकल काम गुडा करि परिबे सिक्किम रीजन रे 1817 रो ट्रीटी रे थिला 1861 रे आउट ट्रीटी साइन हेतला ट्रीटी ऑफ तुमलोंग ओके formally established Sikkim as a protectorate state of British India रो गोटे स्टेट हिसाब रे सेटअप हेतला as per the treaty of Tumlong which was in 1861 Calcutta convention गोटे हेतला 1890 रे ओके demarcated the vital Sikkim Tibet border signed between Viceroy Lord Lansdowne and King China तो एम दी जन को भितरे तबे देखु तो हम ऑलरेडी तमु देखेली चाइना रो एंटायर बॉर्डर तमे एठी कहि परिबो इट इज चेकिंग माने शेयरिंग
with India हला सिक्किम होची तोरा एंटायर बॉर्डर तमरो शेयर करूची सो ए जो बॉर्डर टा तमरो डिसाइड हेथिला केबे 1890 रे कहा को मानकर टाइम रे सो इंडिया तरफ रु सेतबेले थिले लॉर्ड लैंडसोन एंड किंग चाइना ओके प्रोटेक्टोरेट स्टेटस माने इंडिया जेतबेले इंडिपेंडेंस गेन कला सिक्किम चूज नॉट टू जॉइन द इंडियन यूनियन इमीडिएटली संगे संगे बहुत सारा राज्य थिले जो माने संगे संगे जॉइन करया पे इच्छुक नथिले राइट इंडियन यूनियन रे बहुत लेटर स्टेजेस रे से माने जॉइन कले सिक्किम वाज आल्सो नॉट रेडी 1974 पर्यंत इट वाज नॉट रेडी तो से जो पीरियड ता थिला माने आमे जेतबेले इंडिपेंडेंट हेलो आ सिक्किम जेतबेले जॉइन हैला ए जो पीरियड ता रहिला तमरो 1947 टू 1974 ताको हमें कहबा प्रोटेक्टोरेट स्टेटस माने जेहेतु से स्टेट हे नथिला सेतबेले इंडिया रो इंडियन स्टेट हमें कर नथिलु instead under the Indo-Sikkim treaty which was in 1950 Sikkim became an Indian protectorate hela Indian protectorate hi thila which meant Sikkim retained its internal autonomy but the government of India took responsibility for its defense external affairs and communication jehetu tar location ta ette strategic jaga re achi and no doubt it से रेडी नथिला इंडियन यूनियन को जॉइन करिवारे स्टिल इंडिया रो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस रो दायित्व सब नै थिले बिकॉज़ ऑफ इट्स लोकेशन ऑब्वियसली हैला ट्रांजिशन टू एन एसोसिएट स्टेट 1974 रे बाय द अर्ली 1970 देयर वाज अ ग्रोइंग पॉलिटिकल अनरेस्ट इन सिक्किम with the local population demanding greater democratic rights and closer ties with India तो जो माने तंगर लोकल पॉपुलेशन थिले से माने डिमांड करले जते बळे कि नाही हमको इंडिया रे ऐड करा जाओ देन तापर ए सब जिंस तमरा हला से जाई कि ना से इंडिया रे ऐड हला सो इन रिस्पांस द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाउ दिस इज इंपोर्टेंट ओके क्वेश्चन एटा पचार दबो को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा तमरो सिक्किम को गोटे स्टेटस मिलिथिला एसोसिएट स्टेट रो स्टेटस ता मिलिथिला ऑफ द इंडियन यूनियन a status not given to any other state before or since हैला थरे ही माने गोटे ही स्टेट जहा को गोटे एसोसिएट स्टेट हिसाब रे हमें मान्यता देथिलु ओ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 अच्छा ओके सो 1974 रे हम एसोसिएट स्टेट हिसाब रे देलु 1975 रे फुल स्टेटहुड दिया जायथिला the associate status did not fully satisfy the democratic aspirations of the Sikkimese people मतलब कहले लोकल पीपल माने डिमांड करथिले कि हमको इंडिया सहित जोड़ा जाओ बट हमें एसोसिएट कर देलो 1974 रे बट एसोसिएट रे से माने खुशी हेलेनी तो दे डिमांडेड प्रॉपर स्टेटहुड जोटा कि तांको 1975 अप्रैल रे दिया जायथिला so the chief minister of Sikkim appealed to the Indian parliament for full integration a special referendum was held जोठी कि तमरो 97 of the voters chose to abolish the Chogyal monarchy and fully join India consequently the 36th constitutional amendment act 1975 was passed तो पूर्वरु जोटा थिला 35th constitutional amendment act that gave associate status am I clear आ परर जो amendment act थिला 36th amendment act ता हिसाब रे आकु स्टेटहुड रो मान्यता मिली थिला so it made Sikkim the 22nd state of Indian Union and माने केबे एटा हिथिला 16th May 1975 okay clear so ए दिन बेसिकली से हमरो एंट्री करथिला इंडिया रे under the 36th constitutional amendment act 1975 so एटा कंफ्यूज करे पे तुमको ए दीटा स्टेटमेंट पचारि दे पारे कि 35th constitutional amendment रे ताको स्टेटहुड दिया इतला कि 36th रे दिया गला कि कोन तो एंटायर बैकग्राउंड भी हमको जानिथिबा दरकार special constitutional protection to protect the unique cultural identity history and land right of the Sikkimese people article 371F was inserted into the Indian constitution so very important so Sikkimese people manakar jehetu they were not
part of India during joining. India ଯେତେବେଳେ ଆମର independent ହେଲା, they were not part of India. ସେମାନେ ପରେ add ହେଲେ, ପରେ add ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ monarchy କୁ belong କରୁଥିଲେ, monarchy rule ସେଠି ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା rights ହିସାବରେ ଗୋଟେ article insert କରାଗଲା, which was article 371F. Okay, this article ଯେମିତି article 370 मन अछि, it was for Jammu and Kashmir, ता परे परे article 371F, it is for Sikkimese people. This article safeguards the old Sikkimese laws and ensures that land and properties cannot be easily purchased by non-Sikkimese individuals. Non-Sikkimese individual माने easily Sikkimese people मानकर land purchase करी परिवे नहीं, preserving the local demography. Okay, Sikkim is the only state in India where eligible native residents are exempted from income tax. Which fellow? Important point. Only state in India जोठी की तमरा income tax दियंतिनी से माने native residents those who are eligible. Okay, so this is secured by which article? Article 371F of the Constitution and Section 10 of the Income Tax Act 1961. This special status stems from the 1975 merger treaty, allowing the residents to pay no tax on income from any source within the Sikkim. Okay. अच्छा, कहली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट हिसाब से बहुत ही फेमस, तो 2016 रे सिक्किम थिला इंडिया रो फर्स्ट ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक स्टेट हला. The journey which began with a legislative resolution in 2003 involved completely phasing out chemical fertilizer. से totally chemical fertilizer use करंती नहीं, pesticide use करंती नहीं, ता बदला रे organic alternatives use करंती. 2018 रे सिक्किम won the prestigious UN FAO Future Policy Gold Award. ए अवार्ड तभी से पाई थिला 2018 रे, सबुठ बेस्ट पॉलिसीज जेतु से करथिला, ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरा लार्ज स्केल से आनी रखी थिला. एंड बस सेतिक ही इंपोर्टेंट एगुडा तो देखि परिबो, से रिलेटेड माने ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड एगुडा. ओके, नेक्स्ट रिसेंटली पेपरलेस जुडिशियरी भी तमरो सिक्किम, एटा भी गोटे न्यूज थिला. पेपरलेस जुडिशियरी को स्टेट तमरो अचीव करछि, इट इज आल्सो सिक्किम. तार आंसर भी सिक्किम हबो. ओके, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर मु तुमको कहली चाइना, भूटान, एपटे वेस्ट बेंगल, बिकॉज सिक्किम को जीवा पाए वर्तमान पर्यंत किछि रेल रूट नहीं, वर्तमान काम चली छी. बट इफ यू वांट टू विजिट सिक्किम किछि तुम रेल रूट रे जाई परिबनी, इधर माने फ्लाइट कनेक्टिविटी भी एते नहीं. गोटे एयरपोर्ट अछि बट सेठी फ्लाइट नॉर्मली जीवा आसबा करिनी. तुमको जदि सिक्किम जीवार अछि यू हैव टू गो टू वेस्ट बेंगल, वेस्ट बेंगल तुम जाई परिबो सिक्किम को. ओके, बाय ट्रेन हो कि बस हो, बट वेस्ट बेंगल जीवार अछि. वेस्ट बेंगल रु आउट माने तुमको सिक्किम जीवा पे सेम ट्रेन से सब किछि मिलिबो नै. ओके, सो इट इज आल्सो होम टू माउंट कंचनजंगा which is the highest peak and the world's third highest. ये सब हमें जानी छु. The state is primarily drained by Tista River. Entire सिक्किम रे तमे देखिबो तीस्ता रिवर फ्लो होची, which is a vital tributary of the Brahmaputra, and tributaries like Langit, Lonak, Talung ये सब होची सेही तीस्ता रिवर रो tributaries. Okay, the sharing of Tista River waters remain a major contentious diplomatic issue between India and Bangladesh. मु कहली जो भी तमरो रिवर टा दीटा स्टेट को सेपरेट करे, दीटा कंट्री को सेपरेट करे, से सब बड़े डिस्प्यूट रही थाए. तो तीस्ता रिवर आल्सो से माने डिस्प्यूट रो गोटे आ गोटे ये हैला. अच्छा, क्रुशियल ग्लेशियल फॉर्मेशन तमे एटी देखिया को पाओ. माने तमरो prominent lakes include Gurudongmar Lake. Recently mu jaitli, trust me, you should visit once in your life, and it is not easy to visit here. बहुत कष्ट, oxygen पूरा कमी जिवो because this is at around 17,000 feet altitude है ना. Gurudongmar Lake which is the highest माने glacial lake तमे कहि परिबो. आउ चांगू लेक भी अछि ईस्ट सिक्किम रे, एंड मेनमेचो ये सब माने क्रिटिकल जगह गोडा हाई एल्टीट्यूड लेक्स तमे सिक्किम रे देखिया को पाइबो.
क्रिटिकल माउंटेन पासेस अच्छे जेमती आम देखिलु लिपु लेक इज इन उत्तराखंड सेमिति मु तुमको कही नथुला जलेबला दैट इज इन सिक्किम ता छड़ा यू आल्सो हैव डोंखाला आउ जीवा भंजन पास तमे मोस्टली सुनिथिबो नथुला जलेबला बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो हैव डोंखाला and Chiva Bhangjang Pass. It is also in Sikkim. Okay. Okay. हाँ चलो so सब तमें देखला इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताको डेजिग्नेट देथिला एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क हमर अछि which is also a biosphere reserve 2018 रे ताको biosphere reserve हिसाब रे भी गणा जाइथिला also तमें कौन फ्लोरा एंड फौना देखिया को पाओ then you find rhododendron okay this vegetation is famous for rhododendron and oaks आउ तमे रेड पांडा which is their state animal also सिक्किम रो state animal होची रेड पांडा सेटा तमे prominently देखिया को पाओ apart from that tibetan antelope blue sheep और gorals ए सब तमे सेरे देखिया को पाओ अच्छा so ए आंसर टा देई दियो देन हमर क्लास टा आज सरी जो this is also UPSC question 2017 आंसर करो So Varsha is saying A, Tithi is saying A. Okay, answer karibo. Gupti Samrat A. Why 1 and 3? Why river Rangit it's not a tributary of Tista? Just quietly. Tributaries you have Rangit. Rangit is a tributary of Tista. It originates from Sikkim. Okay. Statement 2 ta tamara ठीक अछि. Why you are not saying माने अच्छा तमे कहूछ खाली 2 टा ठीक अछि ना कोन नहीं तमे कहूछ 2 टा भूल अछि because you are saying A okay so 2 टा तो ठीक अछि okay first statement टा भूल अछि the source of river Tista is the same as that of Brahmaputra but it flows through Sikkim Tista रो source आउ ब्रह्मपुत्र रो source दीटार सोर्स मत कहल तीस्ता रिवर रो सोर्स और ब्रह्मपुत्र रिवर रो सोर्स कहल ओके तीस्ता रो सोर्स हला पाहुरे ग्लेशियर ओके एंड ब्रह्मपुत्र रो सोर्स हला अंशी ग्लेशियर तो सोर्स आर डिफरेंट बट एटी कहा गला कि सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र तो दैट इज रॉन्ग ओके तो स्टेटमेंट 8 हमर भूल हेला जति 1 भूल हेला ओके देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली दिस टू ऑप्शंस तो 3 नंबर टा ठीक कि भूल जानिबाटा निहाती दरकार रिवर तीस्ता flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh
ना लेट मी टेक यू टू द मैप जदि मैप रे हमको माने विजिबल अछि कि नै मु भी जाननी बट तमे देखो इज इट विजिबल और नॉट नहीं रिवर टा एठी शो कर एठी रंगीत तमरा शो हेची रंगीत रिवर टा शो करा जायची तमन गोटे देखा जानु थो बहुत छोटो बट स्टेटमेंट 3 टा तमरा भूल हैला कौन थेला स्टेटमेंट 3 it does not flow माने on the border of India and Bangladesh river Tista flows into Bay of Bengal nuho okay because jiba purburu it flows through Sikkim तापर वेस्ट बेंगल भी अछि वेस्ट बेंगल को फ्लो करिबो तापर से बांग्लादेश को एंटर करिबो बुझ पलो जाय कि से फिर ब्रह्मपुत्र रे तमरो मिसिबो सेठी जाय कि तो डायरेक्टली से बे ऑफ बंगाल रे ड्रेन करेनी से वेस्ट बेंगल रो हे कि जाए ओके तापर से बांग्लादेश सहित मिसे देन से ड्रेन करे व्हाटएवर बट इट डज नॉट ड्रेन डायरेक्टली इनटू द बे ऑफ बंगाल सो एटा भी भूल हे गेला सो ओनली 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर ओके एमती कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स पढ़ी पारे तो जहाँ भी न्यूज रे अच्छी जो भी जियोग्राफिकल जगह गुड़ाक तार मैपिंग टा सेति पे मु कहूची बहुत इंपोर्टेंट until and unless you are clear with your mapping you cannot answer all these questions okay so that was it about weekly current affairs from माने 3rd May पर्यंत current affairs हमें पढ़िलु still आउरी 7 स्लाइड थिला आ गोटे टॉपिक बेसिकली थिला इंडिया न्यूजीलैंड रो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विषय रे जोटा कि हमें नेक्स्ट क्लास रे कवर करबा ता छडा आहुरी भी जहां भी रिमेनिंग न्यूज़ अछि हमें नेक्स्ट क्लास रे देखिबा ओके सो केम लागले क्लास कोन नाही मते कमेंट रे कहबो अदरवाइज म केमति जानिबी किछि भी डाउट थिले भी तमे मते कमेंट रे कहबो आर पीडीएफ टा तुमको टेलीग्राम रे मिल जेबो ओके अदरवाइज राय एकेडमी रो ऐप अछि सेठु भी तुमको मिल जेबो किछि भी तुमको माने पीडीएफ रिलेटेड डाउट अछि देन तमे ए जो नंबर कोडी भी तुम एठी तो नाही कोडी भी थिबो सेठ तमे पाई परिबो ओके ए नंबर रे देखा होछि नंबर ए नंबर रे कांटेक्ट करके जदि एडमिशन रिगार्डिंग किछि भी मटेरियल रिगार्डिंग अछि तमे ए नंबर रे कांटेक्ट करके पाई परिबो ओके so thank you everyone for your patience एबे आराम से जाओ सो जा माने जा करछ कर थैंक यू आवर नेक्स्ट क्लास पक्का आसीबो ओके बिकॉज़ प्रीलिम्स पई हमें टिके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स गुडा को मु डिस्कस करियर प्लानिंग करछि सो लेट्स सी गोटे वीडियो मु आनिया को चाहूची जोथरे कि हमें पूरा लास्ट ईयर रो एंटायर करंट अफेयर्स रिवीजन टाइप रो कर दो मु तो पढ़ेई छी से सब आ जो गुडा मिस भी हे जाई छी जो गुडा को भी पढ़ेई छी से सब हमें गोटे वीडियो रे गोटे मैराथन क्लास हबो 3 रु 4 घंटा से क्लास रे हमें कवर अप करबा okay so if you are interested for it then a class ta sarila pare tame comment re कहबो कि मैडम प्लीज ब्रिंग दैट क्लास सो दैट आई विल ब्रिंग दैट क्लास गोटे करंट अफेयर्स क्लास जोथि एंटायर जुलाई 2025 रो नै कि मे 2025 रो सब करंट अफेयर्स कवर अप थिबो okay that will be very beneficial for your prelims because I देखि छु लास्ट prelims रे करंट अफेयर्स रो केते वेटेज थिला so it cannot be ignored thank you good night